welcome to another episode of Kalpavruksha Learning. आज के इस एपिसोड में हम करेंगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस. सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स फ्रॉम द चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, NCERT क्लास 10. तो आज हम जो क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं, these questions have basically appeared in previous exam papers and we are going to practice some of those. So starting off with the first question. The first question has appeared in the board 2025. So let me just write it down. Along with solving each of the questions, I will be writing the year so that you can make a note of it. The question says, in a pair of supplementary angles, the greater angle succeeds the smaller by 50 degree. Express the given situation as a system of linear equations in two variables and hence obtain the measure of each angle. So there is a piece of information that is already given in the question. ठीक है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर टू इक्वेशंस ड्रॉ करने हैं. लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की जब हम बात करते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, it already means that we will have two variables, right? और टू वेरिएबल्स के लिए जो भी आपका क्वेश्चन होगा, that question has to basically clear cut give you two circumstances to define the two variables. यहाँ पे first circumstances जो आपका दिया हुआ है, that is given as a supplementary angle. What is a supplementary angle? Supplementary angle is nothing but two angles summing up to a equal of 180 degree. किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जब एक एंगल ड्रॉ होता है, that is of a 180 degree angle. This is 180 degree, right? So if you divide this like this and say this is x and this is y, so your x degree plus y degree will always be equal to 180 degree, right? This is what we are saying. So let's start off with a question again. तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो एंगल्स हैं और दो एंगल्स का फर्स्ट जो रिलेशन है, दैट रिलेशन इज दैट दे आर समिंग अप टू 180 डिग्री. सो हम ले लेते हैं, लेट द एंगल्स बी x डिग्री एंड y डिग्री. सो एज पर द फर्स्ट कंडीशन x plus y will be equal to 180. This is first. Second बोलता है that the greater angle succeeds the smaller by 50 degree, right? एक बड़ा एंगल है और एक छोटा एंगल है. The greater angle succeeds the smaller angle by 50 degree. So suppose कर लेते हैं कि the y angle जो है वो बड़ा है x से 50 डिग्री से, right? So y is equals to x plus 50. ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, करेक्ट. नाउ हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको? We had read about it that there are two ways of solving the question. The first is the elimination method and the second is basically your substitution method. My bad. So first is your elimination method, second is your substitution method. I think यहाँ पर because x और y के coefficients दोनों 1 हैं, it will be easy for us to start off with the elimination method. So starting off with the elimination method, we will write it. So what we will do, x plus y is equals to 180. So this becomes, अगर हम y को इधर लेके जाएं, 50 को इधर लेके आए, so this will become minus 50 and this will become x minus y. Let's add. This becomes 2x is equals to 180 minus 50 becomes 30. X becomes 65 degree. Right? X becomes 65 degree and your y becomes from equation 2, y becomes 65 degree plus 50 degree equal to y is equals to 115 degree. Now if you sum this up, these both will always sum up to 180 degree. Right? This question has appeared in board 2025. Now moving on to the another question. Sumit is 3 times as old as his son. 5 years later, he will be 2.5 times as old as his son. How old is Sumit at present?
तो हम एक काम करते हैं, बोल रहे हैं कि सुमित है और उसका बेटा है, सो लेट सुमित present age is equals to x. Let Sumit's son's age be y. Right? तो क्या बोल रहा है, सुमित इज 3 times as old as his son. Right? तो उसके सन की एज है y. तो मतलब सुमित की जो अभी प्रेजेंट एज है वो उसके बेटे के 3 times है. That is your basically for equation 1 that is defined. Second, what is defined is that he shall be 2.5 times as old as his son. 5 years later, okay, first एक condition define की है 5 years later. So 5 years later की अगर हम पहले तो बात करें तो 5 years later क्या होगा, 5 years later होगा सुमित equals to x plus 5 Sumit's son is equals to y plus 5, right? So 5 साल के बाद की सिचुएशन क्या होगी, he shall be 2.5 times as old as his son, right? तो अभी यहाँ पे 3 times था, यहाँ पर मतलब x plus 5 will be equals to 2.5 times the present age. So this will be x plus 5 is equals to 2.5y plus 2.5 into 5, which means 25 by 10 into 5 will be 5 2s are 10, 12, 20, 12.5, 12.5, right? So moving on, हम इसको सॉल्व करेंगे. अभी from equation 1 we can substitute x is equals to 3y. So let us put x is equals to 3y minus 2.5y is equals to 12.5 minus y minus 5, right? So what did we do, x is equals to 3y को यहाँ पे substitute कर दिया, which will give you 3 minus 2.5 मतलब 0.5y equals to 12.5 minus 5, मतलब 12 में से 5 रिड्यूस करना, 12.5 में से 5 रिड्यूस करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 12.55. Oh my god, okay. 8, 9, 10, 11, 12, 7. 7.5. Right? So 75 divided by 5. 5 on the 5, 15. So y is equals to, I hope this is visible to you क्योंकि मैं पूरे बोर्ड के लास्ट तक चले गए हूँ. सो y इज इक्वल्स टू 15 इज व्हाट वी आर सेइंग. सो बेसिकली एक सुमित की प्रेजेंट एज विल बी 15 into 3 which is equals to 45 years. मतलब what we are saying is सुमित की present age is 45 years and his son is 15 years, right? आज से 5 साल के बाद his son will be 15 plus 5 20 years old and he will be 45 plus 5 which is 50 years old, right? This is the entire equation. I hope this was clear. We will move on to another question quickly since we have a target of solving at least 10 questions in this. If I keep on running very fast in my videos and you find it very difficult to follow through, please drop in a comment and let me know. I will try to space it down a little bit, but my agenda is always to cover as many theorems or as many things that I can at the max, which is why I keep running, right? Okay, let's move on to the second one. The second question says, sorry, the third question, it says, this is from board 2023, right? Check whether the three lines represented by the equations given below intersect at a common point, right? So यहाँ पे क्या है, आपके पास 3 इक्वेशंस दी गई हैं और उसमें पूछ रहा है कि आप बताओ कि ये कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं. बोर्ड 2023. लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. तो जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस, तो हमने क्या पढ़ा था कि एनी इक्वेशन जो आपकी 2 लाइंस की होती है दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स वन स्ट्रेट लाइन,
राइट. सो अगर हमें यहाँ पे बोला जा रहा है दैट देयर आर थ्री स्ट्रेट लाइंस एंड वी हैव टू चेक दैट इफ दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर और नॉट, मतलब एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट x, y ऐसा होगा जहां पर ये तीनों लाइन एक दूसरे को मीट कर रहे होंगे, राइट. व्हाट इज दैट? कोऑर्डिनेट इज बेसिकली समथिंग दैट वी नीड टू फाइंड आउट. तो इक्वेशंस क्या क्या है हमारे पास? इक्वेशंस है 2x plus y minus 1 is equals to 0, 4x plus 3y plus 5, 4x plus 3y plus 5 is equals to 0, 5x plus 4y plus 8 is equals to 0, right? ये तीन आपके पास इक्वेशंस हैं. अब हम इसमें ट्राई करेंगे सॉल्व करने का कि x की और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें, राइट. x की और y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे फॉर द first two equations and then we will try and substitute in the third equation and we will see if the condition is meeting or not. Let's just check what extra thing has been given here. Nothing else. So that is it, right? So let's start. So क्या करेंगे हम? This is your first equation. This is your second equation and this is your third equation. Correct? Now, from equation 1, 2x plus y minus 1 is equals to 0. So this will become y is equals to 1 minus 2x. Correct? हमें एक y की वैल्यू मिली है in reference to x, but still we have a value of y. Let's substitute this value in equation number 2. Substitute y's value in equation 2. Equation 2 क्या हो जाएगा? 4x plus 3 is equals to 0. So this becomes 4x plus 3 minus 6x plus 5 is equals to 0, which becomes 4 minus 6 is minus 2x, 3 plus 5 is 8. So this becomes 8 minus 2x is equals to 0. So this becomes x is equals to 4. Right? We have got x की value as 4. I will delete the first equation or yeah. Alright. So y का मेरे पास ये equation है. I am deleting the first half bit of it. Okay. Alright. So y की value क्या थी हमारे पास? हमने define किया था first equation से जो हमें मिला था वो मिला था 1 minus 2x. Right? So x is equals to 4 मिला तो 1 minus 2 into 4 मतलब हुआ 8, meaning हुआ minus 7. So y is equals to minus 7. मतलब x, y का जो कोऑर्डिनेट हम ढूंढ रहे थे that coordinate is 4, minus 7. Right? अब 4, minus 7 हमें मिल तो गया है. नाउ वी विल हैव टू फिगर आउट कि इस 4, minus 7 को हम अगर अपनी तीसरी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं इधर x और y, so are we getting each of the coordinates or not? कैसे करेंगे? चेक करते हैं. So क्वेश्चन कहाँ गया? Right. So the third equation is 5x plus 4y plus 8. 5x plus 4y plus 8 is equals to 0. तो अगर हम x की वैल्यू को 4 उठाते हैं, x की वैल्यू को 4 उठाएंगे तो this becomes 20 plus 4y plus 8 is equals to 0. मतलब 4y is equals to minus 28. मतलब y is equals to minus 7. Correct? तो अगर हम x की वैल्यू को हमारे थर्ड इक्वेशन में प्लेस करते हैं एंड वी आर गेटिंग द सेम कोऑर्डिनेट जो हमारा -7 जो x और y की हमारी वैल्यू आई थी विच वाज 4, -7, x की वैल्यू को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पे वी गेट द सेम वैल्यू व्हिच मींस ऑल द थ्री लाइंस आर intersecting each other at a particular point and that point is 4, -7, right? So ये है आपका intersecting point.
So this is another question from board 2023. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना था। पहले दो इक्वेशंस को सॉल्व किया, दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद उसमें जो कोऑर्डिनेट मिला वी विल जस्ट चेक कि वो तीसरी वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं। अगर वो तीसरी वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है which means that we are doing the right thing and we have got the intersecting point. Moving ahead. Okay, this question is not exactly a board paper, but this is basically a similar kind of questions हमने जब अपने chapter पढ़ा था तो उसमें भी हमने solve किया था। तो this is a similar question. आपके बोर्ड्स में इसी सेम पैटर्न के कई बार क्वेश्चंस आए हैं, राइट? सो बिटवीन 23 to 24 में ये क्वेश्चन एक दो बार आया है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज। ये 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस है, राइट? सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इन टाइप के क्वेश्चंस में करना क्या होता है, लेट मी जस्ट डिवाइड द बोर्ड इनटू 2 हाफ्स। तो जब भी हमारे पास 2 डिजिट नंबर की बात आती है, राइट, तो a 2 digit number is always represented by say 10x plus y, right? Why 10x plus y? Understand, जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, say I write 62, how will I write 62 in expanded form? If I have to write, I will write 6 into 10 plus 2. 2 is the unit and this is the tens number, right? And जब इसको multiply करके add करेंगे bottommost rule लगा करके, then we get 62. So basically this is a tens digit and this is a ones digit. So this is 62. Guys, just I go ahead and explain as clear as possible, जितना भी details में हो सके. If there are any confusions, please do get back to me in the comment section. I'll get back to you as soon as possible. Right now, understanding that digit जो हमने number define किया, that is 10x plus y. अब बोल रहे हैं कि इस number को एक बार reverse भी कर दो। अगर मैं इसको reverse करूँ तो reverse करके बनता है 10y plus x. Now the first part of the question is already saying that the sum of a 2 digit number and the number obtained by reversing the digits is 66. मतलब कि 10x plus y plus 10y plus x is equals to 66. मतलब कि हो गया 11x plus 11y is equals to 66. मतलब x plus y is equals to 6 is basically your equation number 1. दूसरा, if the digits of the number differ by 2, find the number how many such numbers are there. If the digits of the number differ by 2, differ by 2 का मतलब क्या होता है? differ by 2 का मतलब होता है कि दोनों का या तो जो उसका डिफरेंस होगा वो डिफरेंस में इक्वल टू 2 होगा। मतलब x माइनस वाई में बी इक्वल टू 2। अब इस केस में एक कंडीशन हो सकती है, या तो x बड़ा हो सकता है या फिर y बड़ा हो सकता है, राइट? बट हम यहाँ पर कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं कि x बड़ा है, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 इज बेसिकली योर सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशंस मिल गई हैं। लेट्स ट्राई एंड यूज द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे तो x plus y is equals to 6 and x minus y is equals to 2. So this gets cancelled. 2x is equals to 8 and x is equals to 4. Right? X is equal to 4. Now if x is equals to 4, तो हम इसको प्लेस करते हैं x minus y is equals to 2. 4 minus y is equals to 2 मतलब 4 is equals to 2. मतलब हमारे पास है x is equals to 4 and y is equals to 2. So basically हमारा जो नंबर हमने कंसिडर किया था वो क्या था? 10x plus y. मतलब 10 into x plus y is equals to 40 plus 2 is equals to 42. Right? दोनों डिजिट्स का नंबर मतलब 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। और क्वेश्चन क्या था? अगर हम 42 को और 24 को ऐड करें तो वी आर गेटिंग 66। ये पहली इक्वेशन थी और ये दूसरी इक्वेशन थी, राइट? दूसरी इक्वेशन थी।
तो दोनों इक्वेशंस को हमारा आंसर जस्टिफाई कर रहा है, which means that we have already found out the answer. The number is 42. The number is 42. X की value 4 and y की value 2. Quickly moving on to the another question. उसके पहले I'll just a quick pro tip when solving these sort of questions. हमेशा अगर आपको कंफ्यूजन होता है इन राइटिंग द एंटायर डिजिट अजम्पशन इस तरीके से, इस डिजिट को पूरा एक तरीके से ना लिख करके आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं. यू कैन राइट इट एज, आपके स्टेप्स के मार्क्स होते हैं आपके एग्जाम्स में, सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग योर मैथ सम्स दैट यू हैव टू राइट ऑल योर स्टेप्स वेरी क्लियरली, राइट? एंड व्हाइल राइटिंग द स्टेप्स यू कैन राइट लेट द टेंस digit number be denoted by x and let the ones digit number be denoted by y, and then उसके बाद आप इस फॉर्मूला को फ्रेम करने के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? सो दिस वाज जस्ट वन क्विक चेक. लेट्स मूव ऑन टू द another question that we can take. So in the process of giving you solved examples, we were चैप्टर के एक्सप्लेनेशन थ्योरम्स पहले ही जा चुके हैं चैनल पे. यू कैन फाइंड देम इन द प्रीवियस वीडियोस. द चैप्टर्स दैट विल कंटिन्यू टू फॉलो आर बेसिकली द सॉल्व्ड एग्जांपल्स, एंड ये सिर्फ फर्स्ट बैच ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स है. सॉल्व्ड एग्जांपल्स और भी आते रहेंगे एंड यू विल फाइंड देम ऑन द वेबसाइट. You can directly DM us also if you want to reach out for a one-on-one class or a session. We can go ahead with the Zoom sessions as well. Please do let me know in the comment section below, or get in touch with us on the Instagram channel where we can connect for a one-on-one class. Moving on to the next question. A man can row a boat downstream for 20 kilometers in 2 hours and upstream for 4 kilometers in 2 hours. Find the speed of rowing in still water. Also find the speed of the stream. Okay, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं. कभी भी अगर आपके पास पानी है, राइट, एंड पानी पे अगर आप एक बोट को फ्लोट करते हो, राइट, इफ योर बोट इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑफ द वाटर, मतलब आपका बोट का एक सर्टेन स्पीड होता है, उस बोट की स्पीड को सपोर्ट करते हुए पानी का एक स्पीड होगा, राइट? सो बेसिकली इफ योर बोट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द वाटर इज बेसिकली y किलोमीटर पर आवर, सो रिलेटिव स्पीड ऑफ द बोट ड्यूरिंग द अपस्ट्रीम रोइंग. What do you mean by upstream? Upstream का मतलब है जब आप पानी के बहाव के साथ चल रहे हो. You are not trying to push it away. You are not cutting it. तो upstream rowing में your boat's speed is x and your water's speed is y kmph. So basically your relative speed is x plus y. Similarly, जब हम downstream की बात करते हैं, उसमें आपका एक बोट होगा, उस बोट का एक स्पीड होगा, सॉरी माय बैड, यहां हम उल्टा कर रहे थे, ये एक होगा, आपकी बोट जा रही है इस तरफ लेकिन पानी आ रहा है इस तरफ, यहाँ पे सब कुछ सेम डायरेक्शन में था ना, पानी की स्पीड फिर भी y है, योर बोट स्पीड इज x. यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यू आर गोइंग अगेंस्ट द वाटर विच मीन्स यू आर गोइंग टू फाइट द करंट, मतलब आपकी बोट जो स्पीड से चल रही है. ओके, एक स्मॉल कंफ्यूजन आई थिंक अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में, सो आई विल टेल यू व्हाट इज दैट. ओके, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, यहाँ पर होगा x माइनस वाई. लेट्स अंडरस्टैंड क्या इशू था यहाँ पे. सो डाउनस्ट्रीम, इमेजिन अ रिवर इज फॉलिंग फ्रॉम अ हिल टॉप, राइट? सो ऊपर से नीचे आती है, एनीथिंग दैट इज कमिंग डाउन इज बेसिकली कॉल्ड अ डाउनस्ट्रीम. किसी भी चीज में किसी की चीज के बहाव के साथ नीचे आना इज डाउनस्ट्रीम, एंड उसमें आपकी स्पीड को एक एक्सेलरेशन मिलता है बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ द वाटर एज वेल. यहाँ पर क्या है, आपकी बोट अगर पानी से नीचे आ रही है विच मीन्स x प्लस वाई होगा. अपस्ट्रीम मतलब यू आर गोइंग अगेंस्ट द करंट, मतलब आप x माइनस वाई होगा. योर boat's speed will get negated by the speed of the water which will be x minus y. This speed is
not the speed of the boat. This is not the speed of the water. This is basically called the relative speed. Sorry, please forgive me for my writing, but this is called the relative speed. Why relative speed? Relative speed because both the speeds will continue to exist but they will continue to negate each other. कभी भी किसी भी सिचुएशन में पानी एकदम स्टिल नहीं हो जाएगा, एकदम स्टिल में भी एक सर्टेन स्पीड उसकी रहेगी ही रहेगी, राइट, एक सर्टेन स्पीड रहेगी ही रहेगी, फिर भी हम एक अप्रोक्सीमेशन पे पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां पर हम कंसिडर करते हैं कि पानी अभी बिल्कुल स्टिल है. सो द क्वेश्चन इज आस्किंग यू एग्जैक्टली दैट. द क्वेश्चन सेज अ मैन कैन रो अ बोट डाउनस्ट्रीम for 20 kilometers in 2 hours and upstream for 4 kilometers in 2 hours. Find his speed of rowing in still water. Also find the speed of the stream. स्टिल वाटर पे उसकी स्पीड निकालनी है हमें, बेसिकली हमें एक्स को फाइंड आउट करना है. मतलब क्यों, हाउ डू वी नो दैट एक्स को फाइंड आउट करना है? वी नो हमें एक्स फाइंड आउट करना है बिकॉज हमने ऑलरेडी बोल दिया कि पानी स्टिल है, मतलब 0 किलोमीटर पर आवर, पानी मूव नहीं कर रहा है. उस पॉइंट इन टाइम पे हमें क्या मिलेगा? सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट. सो नाउ दैट वी अंडरस्टूड अपस्ट्रीम रोइंग एंड डाउनस्ट्रीम रोइंग, लेट्स मूव अहेड एंड सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आपका फिजिक्स का एक फॉर्मूला यूज हो रहा है विच इज योर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, सॉरी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब हमने क्या बोला था? हमने बोला था रिलेटिव स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम कितना था. हम पहले लिखेंगे यहां पर कि लेट द स्पीड ऑफ द बोट is equals to x kmph. Let the speed of the boat, sorry, of the stream be y kmph, राइट. सो अब हम बात करते हैं, सबसे पहला क्या दिया हुआ है? डाउनस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम में क्या होता है हमारा? डाउनस्ट्रीम में हमको एक थ्रस्ट मिलता है. तो अगर थ्रस्ट मिलता है तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी मेरी, डाउनस्ट्रीम स्पीड विल बी x प्लस वाई, राइट. और क्वेश्चन में बोल रहा है अ मैन कैन रो अ बोट डाउनस्ट्रीम फॉर 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स. 20 किलोमीटर्स एंड 2 आवर्स. तो स्पीड ये है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो बेसिकली एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स, राइट. बेसिकली इसका मतलब हुआ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 इज योर फर्स्ट इक्वेशन. करेक्ट. x plus y is equals to 10. Moving on to the second part of the question. इसमें बोल रहा है कि अब हम जा रहे हैं अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम का आपका स्पीड, रिलेटिव स्पीड हमने क्या बोला था? अपस्ट्रीम speed is equals to x minus y. So upstream speed is equals to x minus y is equals to distance traveled upon time taken. Distance traveled is 4 kilometer in 2 hours. 4 kilometers in 2 hours. This becomes x minus y is equals to 2. So this is basically your second equation, right? X plus y is equals to 10 and x minus y is equals to 2. इसको यहाँ पे solve कर लेते हैं. I hope this part of the this thing is visible. X plus y is equals to 10, x minus y is equals to 2. Solving this by elimination method, 2x is equals to 12, x is equals to 6. So basically, speed of boat in still water is equals to 6 kmph. Right? बोट की जो आपकी स्टिल वाटर में स्पीड है दैट इज 6 के एम पी एच. 6 के एम पी एच. और अगर इसमें से हम आपका वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई ऑल्सो. सो बेसिकली 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, मतलब 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू वाई, मतलब वाई इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा. सो 4 के एम पी एच. 4 के एम पी एच विल बी योर स्ट्रीम.
राइट? वी अंडरस्टूड टू थिंग्स यहाँ पे। फर्स्ट वॉज रिलेटिव स्पीड कैसे कैलकुलेट करनी है। अगर हम डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं मतलब कि वी आर गेटिंग सपोर्टेड बाय द स्पीड ऑफ द वाटर, द स्पीड इज एडेड। अगर वी आर गोइंग अगेंस्ट इट मतलब हम रिबेल कर रहे हैं वाटर को, तो हमारी स्पीड रिलेटिव स्पीड माइनस होकर के आएगी, x माइनस वाई। अगर डाउनस्ट्रीम है तो x प्लस वाई। स्पीड का फॉर्मूला नॉर्मली जैसे लगता है वैसे ही लगेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात और सबसे ज्यादा जहां पर मिस्टेक्स आपके हो सकते हैं वहां पर ये होगा कि ध्यान दीजिएगा कि आपकी स्पीड को kmph में डिफाइन किया गया है या मीटर पर सेकेंड में डिफाइन किया गया है। देर आर लॉट ऑफ टाइम्स जहां पर क्वेश्चन पेपर्स इस तरीके से सेट किए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, जहां पर आपकी स्पीड दी गई होगी आपकी kmph में, बट मे बी योर डिस्टेंस इज गिवन इन मीटर्स और मे बी योर टाइम इज गिवन इन सेकेंड्स, राइट? उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। Correct? Okay, moving on to another question. Let's take it. एक क्वेश्चन पिकअप कर रहे हैं हम। A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 6 km per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 6 kmph, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. ठीक, अब हम करते हैं काम। ऑलराइट, क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ेंगे। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्वेश्चन अगेन किसी बोर्ड का नहीं है बट एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपका 22 टू 23 के बीच में कुछ आया था, तो दिस क्वेश्चन हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड। अ मैन कवर्ड अ डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है? ट्रेन, इफ द ट्रेन वुड हैव 6 किलोमीटर फास्टर इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक सर्टेन स्पीड है, तो लेट द ट्रेन speed be x, right? Let the train's speed be x. A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 6 kilometers faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. 6 kilometers faster. If 6 kmph faster, then speed would have been equals to x plus 6 kmph, right? Or it would have taken 4 hours less than the scheduled time. तो हम अगर बोलें कि let the time taken be y, right? Let the time taken be y. तो अभी यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बोलते हैं तो ट्रेन की स्पीड है x इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन y, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एक्स वाई। डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा, करेक्ट? डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, हमारा डिस्टेंस विल बी सेम बिकॉज द ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम दैट सेम डायरेक्शन टू दिस वन। हम बस चेंज करने की क्या बात कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू चेंज ओनली द वी आर ट्राइंग टू सी कि अगर ट्रेन फास्ट चल रही होती तो क्या होता, करेक्ट? तो फर्स्ट इक्वेशन d इज इक्वल्स टू एक्स वाई हमें यहां से मिल गया है, राइट? अब हम बोल रहे हैं कि अगर स्पीड जो है वो x प्लस 6 हो जाती, तो अगर x प्लस 6 हो जाती तो टाइम टेकन वुड हैव रिड्यूस्ड बाय 4 आवर्स, राइट? It would have taken 4 hours less than the scheduled time. It would have taken 4 hours less. तो मतलब होता y माइनस 4। सो इस केस में आ जाता है d इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 इंटू वाई माइनस 4। तो d इज इक्वल्स टू एक्स वाई
plus 6y minus 4x minus 24. So D is equals to, right. So let us leave it here. ऑलराइट, सो अभी हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन को हम अभी 2 मार्क नहीं कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, d इज इक्वल्स टू एक्स वाई को हम यहाँ पर लेकर जाते हैं, d इज इक्वल्स टू एक्स वाई को अगर हम यहाँ पर डालते हैं, एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 6y माइनस 4x माइनस 24, व्हाट आर वी गेटिंग, एक्स वाई को निगेट करता है, एक्स वाई को निगेट करेगा तो इन दिस इक्वेशन विल बिकम 6y minus 4x is equals to 24. मतलब let's take it as 2. So 2 का हो जाएगा 3y minus 2x is equals to 12. Right? This is your equation say 2. Correct? अब यहाँ पर एक और कंडीशन दी गई है आपकी, यहाँ पर एक और कंडीशन बोलता है एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर, मतलब अब अगर तुम्हारी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है 6 किलोमीटर से, मतलब अगर अब की बार हो गई स्पीड x माइनस 6, तो जो टाइम लगेगा, time will be equal to, it would have taken 6 hours more than the scheduled time, it would have taken 6 hours more than the scheduled time, so d by y plus 6, करेक्ट, तो मतलब यहां पर हो जाएगा x माइनस 6 इंटू वाई प्लस 6, तो मतलब हो जाएगा d इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 6y प्लस 6x माइनस 36. सो एक्स डी के एक्स वाई अगर हम रिप्लेस कर देते हैं तो एक्स वाई माइनस 6y प्लस 6x माइनस 36, एक्स वाई गेट्स निगेटेड एंड दिस बिकम्स 6y minus 6x is equals to 36. So this becomes y minus x is equals to 6. मतलब this becomes equation number 3. Right? Y minus x is equals to 3. Second equation आई थी 3y minus 2x is equals to 12. Correct? अब हम एक स्टेप बैक लेकर के बस एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हमें सॉल्व करना है, राइट? ओके, हमने क्या करा, ट्रेन की एक सर्टेन स्पीड हमें बताई गई थी, उस सर्टेन स्पीड के हिसाब से हमारा एक डिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू कमिंग एज d इज इक्वल्स टू एक्स वाई, वाई क्योंकि x इज इक्वल्स टू d बाई वाई का हमारा फॉर्मूला हुआ, डिस्टेंस दोनों में सेम रहेगा इज व्हाट वी आर सेइंग, तो डिस्टेंस क्योंकि हमारा सेम रहेगा, d की वैल्यू एक्स वाई यहाँ पर रिप्लेस करने से हमें सेकेंड इक्वेशन जो मिल रही है दैट इज दिस वन, थर्ड इक्वेशन जो हमें मिल रही है विच इज दिस वन, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन. Okay, now we will try to solve the second and the third equation. So third equation में क्या है, x y minus x is equals to 6 है ना, तो x is equals to y minus 6 को अगर हम यहाँ से उठाते हैं और सेकेंड वाली जो इक्वेशन है 3y minus 2y minus 6 is equals to 12. So 3y minus 2y plus 12 is equals to 12. So 12 gets cancelled. 3y is equals to 2y. Sorry, my bad. 3y minus 2y मतलब y is equals to 0. ये क्या हुआ? Let's understand. X is equals to y minus 6. All right. So if this is 3y minus 2y plus 12 is equals to 12, y is equals to 0. Okay, y is equals to 0. एंड इस y के वैल्यू को अगर हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं तो x इज इक्वल्स टू माइनस 6.
xy minus xy minus 6y plus 6x minus 36 xy okay minus 6y minus 6x all right अगर इधर आता है तो all right 1 minute this equation will be we will just solve it from here okay यहाँ पे आपका minus 6y plus 6x is equals to minus 36 है if this comes this side then this still becomes your minus 6x plus 6 minus 6y plus 6x which means that this will become minus y plus x is equals to 6 so x minus y is equals to 6 here. My bad. We will fix it up from here. Let's see what happens. So x minus y is equals to 6 है. So basically y is equals to x minus 6 है. Correct? Substituting it into the second equation, it becomes 3x minus 6 minus 2x is equals to 12. So 3x minus 18 is minus 2x is equals to 12. 3x minus 2x is equals to x and this becomes 12 plus 18. So x is equals to 30 and y is equals to x minus 6. मतलब y is equals to 30 minus 6. 30 minus 6 is equals to 24. So y is equals to 24. करेक्ट निकालना क्या था हमें फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी मतलब d d क्या था हमारा x इंटू वाई तो मतलब 30 सॉरी बैड हैंड राइटिंग 30 इंटू 24 मतलब हो जाएगा आपका 24 3 4 12 720 किलोमीटर्स राइट एक एरर हुआ था यहाँ पर विच वॉज योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव का साइन सो बेसिकली एक्स एंड वाई को निगेट करने के बाद जब हमने इस माइनस 36 को इक्वेशन के इस तरफ मूव किया सो बेसिकली द साइंस ऑफ योर एक्स एंड वाई विल नॉट चेंज तो अगर वो चेंज नहीं होता है तो दिस स्टिल रिमेन 6y plus 6x is equal to 36 तो बेसिकली y की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाती थी जो यहाँ पर हमारा जीरो आ रहा था वो y x minus 6 को रखने पे x is equals to 30 आया and now y is equals to 24 so basically the total distance that was there that the train has to cover is 720 kilometers right we will quickly hop on to another question एक और question लेने की कोशिश करते हैं then उसके बाद we will move on to a graphical question को मैं आपको format बता दूंगी and I will leave it at there plus I will want you guys to engage with the video and let me know that if you were able to plot the points the coordinates on a graph paper and were able to solve it or not right moving on एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पिकअप कर रहे हैं दैट क्वेश्चन इज A motorboat covers a distance of 16 km upstream and 24 km downstream in 6 hours. In the same time, it covers a distance of 12 km upstream and 36 km downstream. Find the speed of the boat in still water and that of the stream. Okay. Again, same thing. जो चीज ध्यान में रखनी है वो ध्यान में ये रखना है दैट वेन एवर यू आर कमिंग डाउन स्ट्रीम यू विल बी रिलेटिव स्पीड में आपकी पानी की स्पीड ऐड हो जाती है वेन एवर यू आर गोइंग अप स्ट्रीम यू आर कटिंग द वाटर सो बेसिकली रिलेटिव स्पीड will get subtracted right start करते हैं क्वेश्चन को a motorboat covers a distance of 16 किलोमीटर तो डिस्टेंस है आपका 16 किलोमीटर लिख लेते हैं Let's take one more question in the subjective type. A motorboat covers a distance of 16 kilometers upstream and 24 kilometers downstream in 6 hours. So basically 6 घंटे के अंदर वो 6 घंटे के अंदर वो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी जा रहा है और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम भी आ रहा है राइट हमने जब अपना अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि लेट द बोट speed is equals to x kmph right and let the streams speed is equals to y kmph तो जब अपस्ट्रीम की हम
स्पीड की बात करेंगे तो अपस्ट्रीम में आपका x माइनस वाई हो जाएगा, और हम जब डाउनस्ट्रीम की बात करेंगे तो ये x प्लस वाई हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि 6 घंटे में वो 6 घंटे में वो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी जा रहा है और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम भी आ रहा है। मतलब 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम मतलब स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट। तो अगर हमें टाइम दिया गया है तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो 24 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर रहा है विद द स्पीड ऑफ x प्लस वाई, और 16 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर रहा है विद द स्पीड ऑफ x माइनस वाई इन 6 किलोमीटर। बेसिकली टाइम दोनों को ऐड करने पे आ रहा है 6 आवर्स, सॉरी 6 किलोमीटर नहीं 6 आवर्स। दिस इज योर फर्स्ट रिलेशन ऑफ द इक्वेशंस, करेक्ट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। दिस बिकम्स 24x माइनस वाई प्लस 16x प्लस y is equals to 6, which becomes, so okay, so फैक्टराइज कर देते हैं सबसे पहले हम इसको। ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 8 and 3, 12 plus 8, 3. Right? Now, 12x minus 12y plus 8x plus 8y is equals to 3. So, 12x plus 8x becomes 20x. Minus 12y plus 8y becomes 12 minus 8, 4y is equals to 3. राइट, ये हो जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब समझते हैं सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रही है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन, प्लीज बी केयरफुल व्हेन यू आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। मैं इसका एक क्वेश्चन और लूंगी इस तरीके का। ओके, लेट्स सी। Whenever you get confused with some sort of a question, एक typical type के question के साथ अगर आप confuse हो रहे होते हो ना, my personal suggestion is that you take 2-3 similar type of questions from 2 to 3 different books. If you get the solved examples वाला question, solved question papers का booklet, right? You will get same question from the last 2 to 3 years. Please try and solve all of them together एक साथ में, one shot में. You will be able to understand the concept clearly. अगली बार confusion नहीं होगा। ये मेरा pro tip है. You can take it. If it works out for you, it works out for me always. Okay, next में बोल रहा है it covers a distance of 12 kilometer upstream and 36 kilometer downstream. Find the speed अब in the same time. अब हम बात करेंगे in the same time. मैं सिर्फ डिलीट करने वाली हूँ, ये पोर्शन को मैं रिटेन करूंगी। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर रहेगी, सेकेंड इक्वेशन के लिए आई एम गोइंग टू जस्ट रिमूव दिस पोर्शन। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने रिटेन कर लिया है। अब वो क्या बोल रहा है कि सेम टाइम में वो अब जो है 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम भी कवर कर लेता है। मतलब बहुत ही कोई तगड़ी सी बोट है, ठीक है। तो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड प्लस 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, राइट। 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, हो ये रहा है कि 12 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, 36 डिवाइडेड बाय x, टाइम सेम है मतलब 6। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं ना इसको, कि एक बार इसको भी फैक्टराइज कर लेंगे, तो बाद में करते हैं x प्लस वाई प्लस 36 x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। So this becomes 12, okay, 6. So 2x plus y राइट, 6 से फैक्टराइज कर दिया। सो दिस विल बिकम 2x प्लस 2y प्लस 6x minus 6. So this becomes 2x plus 6x is equals to 8x. 2y minus 6y is equals to minus 4y is equals to 1. ये होगी सेकेंड इक्वेशन, राइट। एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे यहाँ पर। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो बन जाएगा ये कैंसिल, 8 माइनस 20 बनता है माइनस 12x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3
इज इक्वल्स टू -2, मतलब x इज इक्वल्स टू 6, राइट। अब x इज इक्वल्स टू 6 आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में उठा करके इसको पुट कर देंगे, तो 20x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 3 है, तो x इज इक्वल्स टू 6 ले लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 6 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 120 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 3, तो 4y इज इक्वल्स टू 120 माइनस 3, 120 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 117, तो y इज इक्वल्स टू 117 डिवाइडेड बाय, करेक्ट, x इज इक्वल टू 6। एक और क्वेश्चन हम पिक करते हैं। दीज क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम द बोर्ड एग्जामिनेशन, बट दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव अपीयर्ड, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशंस पहले। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ। So we'll take up two such questions. First question is, places A and B are 180 kilometers apart on a highway. 180 kilometers apart on a highway. Now, one car starts from A and one car starts from B at the same time. मतलब एक कार यहाँ से स्टार्ट कर रही है और एक कार यहाँ से स्टार्ट कर रही है और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब दिस travels at x kilometer and this travels at y kilometer per hour, then they meet at 9 hours. Then they meet at 9 hours is what they're saying. Speed का फॉर्मूला क्या होता है? Speed is equals to distance traveled upon time taken, right? तो डिस्टेंस हो जाएगी हमारी स्पीड इनटू टाइम, राइट। अब हम बोल रहे हैं कि 9 घंटे बाद ये मिल रहे हैं, करेक्ट। सो 9 आवर्स बाद इफ दे आर मीटिंग एंड ए इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ एक्स, सो बेसिकली डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेंगे? D1 जो फर्स्ट कार ट्रैवल करेगी दैट विल बी, अगर हम सपोज करते हैं कि उसका उसका टाइम लग रहा है 9 और उसकी स्पीड है x, so 9x, right? And D2 will be equals to your y है, y उसकी स्पीड है और 9 घंटे के बाद ही, so basically 9। तो उसने डिस्टेंस कितना, कार नंबर ए ने, कार ए ने ट्रैवल किया डिस्टेंस 9x और कार बी ने ट्रैवल किया डिस्टेंस 9y, राइट। डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2 we've received it। अब हम बोल रहे हैं कि ये दोनों जहां पर भी मीट कर रहे हैं उसका सम होगा आपका 180, करेक्ट। उसका सम होगा आपका 180, वाई? बिकॉज जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू 180 किलोमीटर। मीट किया है, ओवरलैप नहीं किया है। ओवरलैप नहीं किया है मतलब हाफ ट्रैवल किया है या मोर देन हाफ ट्रैवल किया है, डज नॉट मैटर, इट इज अ मिड पॉइंट और नॉट, डज नॉट मैटर, बट दे हैव मेट समवेयर, राइट। सो व्हिच मींस दैट इसका सम विल बी इक्वल्स टू D1 plus D2 should be equals to 180, which means that 9x plus 9y will be equal to 180 and x plus y is equals to 20, which means the first equation. Now moving ahead to the second part of the question. The second part of the question says, now if the car travels in the same direction at different speeds, they meet in 9 hours. Okay, if they travel towards each other with the same speeds, अब क्या कर रहे हैं, अब वो towards each other meet कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, they meet in an hour, what are the speed of the cars? अब जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या होगा? तो obviously, sorry, okay, so I will just write down the first equation. The first equation was x minus y is equals to 20. अब जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो स्पीड है x और यहाँ पर है y, राइट। और यहाँ पर अब उनको टाइम लग रहा है मीट इन एन आवर, मतलब 1 घंटे में मीट कर रहे हैं। तो 1 घंटे में मीट कर रहे हैं बेसिकली, तो मतलब हो गया 1x और 1y इज इक्वल्स टू 180, right? 1x plus 1y is equals to 180, which means that x plus y is equals to 180. अब सेम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है।
x is equals to 100, which means that the first car A is traveling at a speed of 100 kilometer per hour and Y is traveling at a y is traveling at 80 kilometers per hour. So x is equals to 100 and y is equals to 80 kmph is basically your entire आंसर. सो एक और क्वेश्चन जो हम अभी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इज ऑल्सो not from any of the board examination but a question that has appeared of a similar type in previous examination. The question says a motorboat covers a distance of 16 kilometer upstream and 24 kilometer downstream in 6 hours. Basically एक बोट है जो अपस्ट्रीम जा रही है 16 किलोमीटर्स एंड डाउनस्ट्रीम आ रही है 24 किलोमीटर्स इन 6 आवर्स एंड दूसरे टाइम पे it covers a distance of 12 kilometer upstream and 36 kilometer downstream. Find the speed of the boat in still water and that of the stream. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने इसके पहले किया था. ये क्वेश्चन यहाँ पर है विल स्टार्ट ऑफ विद so let the speed of the boat be x and let the speed of the stream be y. So we have to find both x and y. Now upstream की स्पीड है आपकी x माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम की स्पीड होगी x प्लस वाई. वाई जब हम डाउनस्ट्रीम आते हैं तो वी आर सपोर्टेड बाय द स्ट्रीम का फ्लो, स्ट्रीम का स्पीड. सो बेसिकली द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम गेट्स एडेड टू द स्पीड ऑफ द बोट. जब हम अपस्ट्रीम जा रहे होते हैं तो अपस्ट्रीम में क्या होता है, वी आर गोइंग अगेंस्ट द फ्लो एंड हेंस इट इज x माइनस वाई. सेम चीज स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड हेंस t1 एंड t2 का फॉर्मूला लगेगा अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. अपस्ट्रीम 16 किलोमीटर्स, डाउनस्ट्रीम 24 किलोमीटर्स, दोनों का टाइम t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू 6. यहां हमने एक अजम्पशन लिया है एंड व्हाई दैट अजम्पशन आई विल टेल यू. सो यहां पर क्या है कि क्योंकि डिनोमिनेटर में बोथ x एंड y आपके पास प्रेजेंट है, we have considered this whole thing as a variable. So 1 x minus y is equals to a and 1 upon x plus y is equals to b. ये हमने क्यों किया है is because अभी अगर यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करते ना तो यहाँ पर आपके पास एक और एक पोर्शन आ जाता which was supposed to be x y. उस एक्स वाई को लेकर के इक्वेशंस काफी लंबे हो जाते, सॉल्वेबल वो फिर भी होता बट वो इक्वेशंस काफी लंबे हो जाते व्हिच इज व्हाई वी कंसीडर्ड ऑफ पार्किंग इट असाइड एंड मैपिंग इट टू ए एंड बी. तो अगर ए एंड बी से इसको रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 16a plus 24b is equals to 6. So basically this becomes 8a plus 12b is equals to 3. मूविंग अहेड, दूसरा क्वेश्चन है आपका. हम बोल रहे हैं कि अब की बार हम जो ट्रैवल कर रहे हैं अपस्ट्रीम 12 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम 36 किलोमीटर. 12 divided by x minus y plus 36 divided by x plus y is equals to 6. Time same लग रहा है. Second part of the question says a distance of 12 kilometer upstream and 36 kilometer downstream. Find the speed of the boat in still water and that of the stream. Again यहाँ हमने डायरेक्टली क्या करा, इसको 1 by x minus y को हमने कंसिडर किया था a and this becomes b. So this equation becomes 2a plus 6b is equals to 1. So I have equation number 1 and equation number 2. एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं. इक्वेशन नंबर 2 को हमने मल्टीप्लाई किया है 4 से. सो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो दिस बिकम्स 8a प्लस 12b by 4 को 2 से तो दिस बिकम्स 24. 6 4s are 24. What is this? Multiply equation 2 by 4. Okay. Okay. 12b, right. वो ही सही था. This is your equation 2 को हमने मल्टीप्लाई किया है 4 से, so this becomes 2a plus 6 4s are 24b is equals to 4. This is your equation number 2. Equation 1 को हमने as it is यहाँ से पिक किया 8a plus 12b is equals to 3. फिर उसके बाद हम इस चीज को सॉल्व करेंगे. minus 8a gets cancelled, 24 minus 12 becomes 12b and 4 minus 3 becomes 1. So b is equals to 1 by 12.
अगेन 1/12 को हमने अपने इक्वेशन में पुट करा, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे. सो वी ट्राई टू पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2. 2a plus 6 into 1/12 is equals to 1. So this becomes 1/2. 2a plus 1/2 is equals to 1, मतलब 2a is equals to 1/2 and hence this becomes a is equals to 1/4. Now आपके पास a is equals to 1/4 है, b is equals to 1/12 है. अब हम ये वाला assumption को लेकर के निकालेंगे x और y का वैल्यू. क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है बिकॉज वी आर डीलिंग विद टू वेरिएबल्स एंड टू टाइप्स ऑफ सिनेरियोज, राइट. ओके, सो a की वैल्यू है 1/4 एंड वी आर सेइंग दैट 1/4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस y. सो x माइनस y इज इक्वल्स टू 4. b इज इक्वल्स टू 1/12. b is equals to 1/12. So 1/12 is equals to 1 upon x plus y. x plus y is equals to 12. So अब हम सॉल्व करेंगे x plus y और x minus y. x plus y is equals to 12. x minus y is equals to 4. 2x is equals to 16. x is equals to 8. Similarly, x is equals to 8 को हम यहाँ पर पुट करेंगे. 8 plus y is equals to 12. So y is equals to 4. मतलब x बोट की स्पीड, y स्ट्रीम की स्पीड. Stream की speed is y is equals to 4 and x is equals to 8. Right? This question is done. ये question का आपका जो solution है, ये solution you will find it on the Instagram page also. Once this video goes live, you will find the solution on the Instagram page for this question also. This question is a little complicated, but it is worth solving for. If you want to reach out to me directly, please reach out to me through the comment section below. If not, you can go ahead to the Instagram account and follow the solution for this particular question. So जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमने क्वेश्चंस में देखा कि वी हैव 2 to 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मेजरली जो लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स में आते हैं. फर्स्ट इज बेसिकली योर डिजिट वाले क्वेश्चंस, जहां पर आपका 2 डिजिट नंबर एक डिफाइंड होता है, उसका रिवर्स होगा, फॉरवर्ड होगा, डिजिट्स होंगे, क्लासिफिकेशन होगा एंड दैट्स इट, राइट. सिमिलरली जब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की, तो उसमें हमने देखा कि एक स्पीड, वाटर की स्पीड, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, इसका एक आता है. थर्ड होता है आपका एज बेस्ड क्वेश्चन आता है. और एक और जो हमने टाइप के क्वेश्चन देखे थे वो है आपका डिस्टेंस वाला. डिस्टेंस इन द सेंस कि इफ डिस्टेंस एंड स्पीड बेसिकली, जो कि इट्स नॉट ऑन वाटर बट मे बी से कार्स, द वन दैट वी डिड जस्ट नाउ. Most of the questions will revolve around this theory only. in इन्हीं formats के आसपास ही revolve करेगा. There will be very few that will move away from that. And if the question is moving away from that, it becomes really really important for you to focus on what is the question going to ask you. ठीक है. कुछ क्वेश्चंस में हम उसको लीनियर इक्वेशंस के जब फॉर्म की बात आती है तो हम उसको ग्राफ पे सॉल्व करते हैं. ग्राफ पे सॉल्व करने से you need coordinates that you need to plot and then you figure out the intersecting points and that's how you find out your answers of x and y in most of the cases, right? एक क्वेश्चन हम अभी लेंगे ग्राफ पे सॉल्व करने वाला and we will see that what exactly are we talking about. At the Bangalore Marathon, the 42-kilometer route is designed such that marathoners run in a straight line for 21 kilometers and return along the same path in the opposite direction. A marathoner running against the wind covered the first half of the marathon in 2 hours. Then he covered the second half running with the wind in 1.5 hours. Assume that the marathoner ran at a constant speed and that the wind speed and direction did not change throughout the marathon. So basically क्या है, एक मैराथन है, ठीक. इस क्वेश्चन को थोड़ा टाइम देंगे हम. एक मैराथन है. The 42-kilometer route is designed such as the marathoner runs in a straight line for 21 kilometers and return along the same path in the opposite direction.
बेसिकली एक रूट है, ठीक है। ये पूरा जो लेंथ है, द पेरीमीटर, इस पूरे एरिया का ये जो पूरा हमारा रनवे है, इस रनवे का लेंथ इज 42 किलोमीटर्स, राइट। रूट and the straight line for 21 kilometers and return along the same path in the opposite direction. So basically ये 21 and then उसके बाद ये 21, right? You go this way and you come back this way, and hence you have 42 kilometers, right? Okay. So now a marathoner running against the wind covered the first half of the marathon in 2 hours, right? तो अब क्या बोल रहा है अगेंस्ट द विंड, तो हम बोलते हैं सेम चीज रिलेटिव थ्योरी काम आएगी यहाँ पर। रिलेटिव थ्योरी काम आएगी यहाँ पर, हम बोलेंगे कि जो मैराथन रन कर रहा है, मैराथनर की जो स्पीड है वो x kmph, जो विंड है, विंड की स्पीड y kmph। नाउ अगेन द सेम थिंग, हम बोलेंगे कि जब से विंड की तरफ चल रहा है, विंड के साथ चल रहा है, राइट। द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन सेज दैट is designed return along the same path, मैराथनर रनिंग अगेंस्ट द विंड। तो बेसिकली जब हम अगेंस्ट द विंड चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, अगेंस्ट द विंड चलेंगे तो x माइनस वाई, विद द विंड चलेंगे तो x plus y, correct? Now, a marathoner running against the wind covered the first half of the marathon in 2 hours. Then he covered the second half running with the wind in 1.5 hours. तो जब वो विंड के अगेंस्ट जा रहा था, जब वो विंड के अगेंस्ट जा रहा था, राइट, तब वो, ओके फर्स्ट लेट्स सी, स्पीड इज इक्वल्स टू distance upon time. Okay, assume that the marathoner ran at the constant speed that the wind is, it did not change throughout the marathon. Calculate the speed in kmph of the marathon and the wind. Okay, now marathoner ran against the wind, covered the first half of the marathon in 2 hours, and then he covered the second half running with the wind in 1.5 hours. जब वो against जा रहा था तो उसको टाइम लगा 2 hours. तो मतलब उसने डिस्टेंस कवर किया होगा हाफ एस इंटू टी। फर्स्ट हाफ में उसने डिस्टेंस कवर किया है 20, सो स्पीड उसकी लगी है अगेंस्ट द विंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, और टाइम उसने लगाया है, टाइम उसने लगाया है 21 divided by 2 and x plus y is equals to 21 divided by 1.5. Okay. ऑलराइट, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि फर्स्ट पार्ट जब उसने विद अगेंस्ट द विंड ट्रैवल किया है, अगेंस्ट द विंड जहां पर उसकी स्पीड थी x माइनस वाई, उसने 21 किलोमीटर कवर किया इन 2 आवर्स। जब वो विद द विंड चल करके आया तो उसका टाइम रिड्यूस हो गया टू 1.5, पर चला उसमें फिर भी 21 किलोमीटर ही था, एंड दिस टाइम हिज अगेंस्ट द स्पीड वाज x प्लस वाई। So x minus y is equals to 21 divided by 2 and x plus y is equals to 21 divided by 1.5. Let's expand the equation. This becomes 2x plus minus 2y is equals to 21, and this becomes 1.5x plus 1.5y is equals to 21. Correct? Now, okay, so we will solve it by elimination method. We multiply the equation this with 2,
ऑलराइट, सो हम क्या करते हैं जब भी हमें एलिमिनेशन मेथड ट्राई करना होता है, राइट? सो एलिमिनेशन मेथड के लिए हम हमेशा जो फर्स्ट वाला इक्वेशन होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स के कोएफिशिएंट के साथ, और जो ऊपर वाला इक्वेशन होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले एक्स के कोएफिशिएंट के साथ, सो दैट हमें एक कॉमन फैक्टर मिल जाए जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकें. आई एम rubbing off this portion so that I can use this part of the board. Now we'll multiply it. 2 into 1.5 becomes 30. So it becomes 3x minus 3y is equals to 21 into 15 by 10. Right? Similarly, 2. 1.5 into 2, this becomes 3x. (31.5 plus 42). 73.5. X is equals to 73.5 divided by 6, which becomes 12.25. Right? And हमने बोला 2x minus 2y is equals to 21. So 2 into 12.25 minus 2y is equals to 21. So 12.25 into 2. 12.25 into 2 becomes 24.5. So 24.5 minus 21 becomes 3.5. सेवन बाई फोर, y इज इक्वल्स टू 7/4. और अगर इसको हमें 1.75 kmph. So basically 12.25 kmph के हिसाब से स्पीड से हमारी बोट चल रही है, एंड 1.75 kmph के स्पीड से हमारी स्ट्रीम की स्पीड है, सॉरी विंड की स्पीड है. करेक्ट? So that brings us to an end of the solved examples for this chapter, right? But this is not the end. Basically, this is one part. I will be putting up more questions as and when I find it. If I find anything more relevant, I will surely put it across. Plus, I am going to do I am looking forward for students who are interested in interactive sessions, basically one-on-one Zoom classes as well. You can find the QR code mentioned on the Instagram channel, plus it is also there on the YouTube channel. You can go and scan it and join the WhatsApp community, wherein you can get the further details. The batches starts for 6th, 7th and 8th right now, but even if you are appearing for class 10 this time and want to give it a shot, please do join. I will be more than glad to help you out in your exam preparations. Rest, all the best for your exams. I hope my videos are making sense and also helping you out in your exam preparation. Thank you for joining today's session.